तो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऐसे नंबर 10 की। ये ऐसे होगा 10 नंबर का, और जितने भी 10 के 10 जो हम ऐसे लिखे हैं वो सारे के सारे फिलोसॉफिकल ऐसे हैं। बिकॉज आज के ज़माने में यार जो सब्जेक्ट बेस ऐसे बहुत कम आते हैं यार, 8 ऐसे आते हैं और 8 के 8 लगभग फिलोसॉफिकल ही होते हैं। तो हमको फिलोसॉफिकल की प्रैक्टिस करनी है। और बाकी के जी जीएस को ऐसे बनते हैं वो तो पॉइंट वाइज हमको चीज़ें याद रहती हैं, तो उसको तोड़ फोड़ के बनाया जा सकता है। बट जो फिलोसॉफिकल ऐसे होते हैं इनमें तरीका पता होना चाहिए कैसे लिखना है, एक जो फ्लो होता है ऐसे का वो बनाना है, तो कैसे बनाना है वो देखते हैं। ठीक है, हमको एग्जाम्पल से सीखने हैं। ठीक है, और ये जितने भी ऐसे ऐसे सारे टॉपर्स कैसे लिखते हैं उसके हिसाब से हैं, उन्हीं के हैं। तो उसको हम पहले समझ रहे हैं, उसका टेस्ट सीरीज में कैसे अप्रोच करना है वो भी देखेंगे। सो जो ऐसे का टॉपिक है वो है कॉन्शियंस इज एन अनप्रैक्टिकल गाइड टू आवर लाइफ एक्शन। कॉन्शियंस इज एंड जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो एक मार्गदर्शक के रूप में आता है जिंदगी भर हमारे साथ, हमारे ज़िंदगी में जो काम करते हैं उसके लिए। सो कॉन्शियंस इज एन इम्प्रैक्टिकल गाइड टू आवर लाइफ एक्शंस। ये है हमारे पास ऐसे का टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय ओपनिंग दिए से थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि कॉन्शियंस होता है क्या है। सो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताएंगे, नहीं देखते हैं कैसे लिखेंगे। वी आर अ सम टोटल ऑफ आवर एक्शन, ईच ऑफ अस आर गाइडेड बाय different things in our behavior and action। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होते हैं जिससे हमारे बिहेवियर को और एक्शन को अफेक्ट करते हैं। एंड डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट नॉर्म्स, ये सब भी क्या करते हैं हमारे पास अफेक्ट करते हैं लॉस, एक्सपीरियंसेस, ये सब भी गाइड करते हैं ह्यूमन के एक्शन को अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, but at the same time there is a common guiding force across time and space, that is the conscience। okay, there is a common guiding force across time and space continuum। और ये क्या है भाई? इट इज नथिंग बट कॉन्शियंस, दैट इज द इनर मोरल कंपास। इट इज नथिंग बट कॉन्शियंस, दैट इज एन इनर मोरल कंपास। एक मार्गदर्शक के तौर पे इसको बोल सकते हैं, अंदर से एक हमारे पास दिशा दिखाने वाला। इट इज एन inner moral conscience which help us to distinguish between right and wrong, which help us distinguish between। जब प्रैक्टिस करो ना तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि यार बोल बोल के प्रैक्टिस करो, बिकॉज बोल बोल की चीज़ें क्या होती है याद रहती है, बोल बोल की चीज़ें ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन बनता है। सो ये तो अपना तरीका है, अपना अपना होता है लोगों का, लेकिन इट इज़ मोर इफेक्टिव बिकॉज एज अ डॉक्टर ये सब जरूरी है, बिकॉज आपको कैसे दिमाग काम करता है ये भी समझना जरूरी है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा कॉन्शियंस के बारे में डीप में जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू जज द वैल्यू ऑफ कॉन्शियंस एज अ गाइड ऑफ आवर एक्शन, कि कैसे ये हमारे एक्शन को गाइड करता है, उसके लिए हमारे पास एक समझना पड़ेगा कि कॉन्शियंस होता क्या है। सो इस प्रकार से लिखेंगे, इन ऑर्डर टू
in order to judge the value of conscience as a guide to our life actions, we must first understand conscience. conscience है क्या? conscience is an inner voice, अंतरात्मा की आवाज that all of us have. It could differ from person to person, but everybody does have a conscience. But everybody does have a conscience. And this inner sense of right and wrong, this inner sense of right and wrong is developed as a part and parcel of moral development, is developed as a part and parcel of moral development of an individual in a society. Okay? जो individuals होते हैं, they are not living in a society to have an inner voice. Okay? यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऐसे ऐसे लोग जो सोसाइटी में नहीं रहे हैं उनके पास भी इनर वॉइस होता है, जैसे कि हम बोलेंगे कि इनफैक्ट इंडिविजुअल्स नॉट लिविंग इन अ सोसाइटी टू दे हैव अ इनर वॉइस. जैसे कि हमारे टार्जन के देखें, टार्जन सोसाइटी में रहता है फिर भी उसके पास एक इनर वॉइस है. टार्जन जो जंगल वाला, जंगली मुगली वाला टार्जन है ना, वो वाला टार्जन फॉर एन इंस्टेंस ऑलवेज न्यू हाउ टू इंटरेक्ट विथ फेलो स्पीसीज, interact with fellow species in the forest. उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉन्शियंस क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, उसके बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे, वो तो बात करनी है. सो क्या होता है कॉन्शियंस, उसके रोल की बात कर रहे थे अब. So not only is conscience present in all of us, it certainly help us to distinguish between right and wrong. इसके और भी बहुत सारे रोल हैं. Conscience present in all of us, it can certainly help us distinguish between
right and wrong. Mahatma Gandhi argued that we all have inner voice, no matter how small, which tell us what is the right thing to do. ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने बोला था इनर वॉइस जो होता है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है, कितना छोटा सा मैटर क्यों ना हो। इमैनुअल कांट बोलते हैं, इमैनुअल कांट believe that following one's conscience is one's moral duty that must be performed for its own sake. He argued that if everybody performed their moral duties, we would seldom witness any wrongs or wrong happening. कभी होगा नहीं ऐसा। The above argument are supported by real examples, है ना। हमने बोला कि इमैनुअल कांट ने बोला कि अगर आदमी खुद की जो मॉरल कॉन्शियस को फॉलो करे, है ना, सो एवरीवन परफॉर्म देयर मॉरल ड्यूटीज, है ना। कभी कभी मुश्किल से ही गलत चीज़ें होंगी। इसको अगर हम आर्ग्यूमेंट को एग्जांपल के साथ अगर सपोर्ट करें, सो द अबव आर्ग्यूमेंट्स आर सपोर्टेड बाय real life examples. Gandhi ji withdrew non-cooperation movement when it was at its peak. Despite wide criticism against withdrawal. His conscience was clear. His conscience was clear that violence was not the way forward. It was certainly a masterstroke as British could. Was a master stroke as British could have easily repressed a violent movement.
could have easily repressed a violent movement when सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल बता दिया हमने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया कि कैसे इनर कॉन्शियस महात्मा गांधी जी का था जिसकी वजह से ये इसको विड्रॉ कर लिए। अगर हम सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दें, सो व्हेन सचिन तेंदुलकर ऑफर was offered 20 crore Pandours in alcohol brand, he स्क्वाल्ड रिफ्यूज, मतलब 20 करोड़ उसको वो करने के लिए 20 करोड़ इनको दिया गया था, बट इसको इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इसको अंदर की आत्मा ने बोला नहीं ये गलत है। व्हेन सचिन तेंदुलकर was offered 20 crore to endorse in alcohol brand, he squarely refused. Or his conscience told him he refused, ऐसे लिखते हैं। ऐसा क्यों रिफ्यूज किया? बिकॉज हिज कॉन्शियंस टोल्ड हिम द नेगेटिव influence such a action would have on young fans. The negative influence such an action would have on his young fans with compassionable minds. और ये एग्जाम्पल दिया हमने, सो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको टू दी नेक्स्ट पार्ट। कैसे? बाय सेइंग दैट सो ऑल ऑफ अस हैव अ कॉन्शियंस, सो all of us have a conscience that tells us between right and wrong, and we have history present to prove that conscience as guide produce proactive and noble outcomes. That conscience as guide produce proactive plus noble outcomes। स्पेशली अगर हम बात करें इन situations where there are no rules, norms and code, or no established rules, norms, codes, etc. This could bring us to conclusion could
bring us to conclusion that conscience is a practical guide to our life action, but in reality individual conscience and his or her relationship with conscience is more complex. Individuals conscience and his or her relationship with conscience is more complex. ओके यहाँ पे हम बात करें एग्जांपल्स की, तो टू बिगिन विथ कैसे ये कॉम्प्लेक्स है इसको बताएंगे. कॉन्शियंस इज सब्जेक्टिव. कॉन्शियंस इज व्हाट? इट इज सब्जेक्टिव. ये डिपेंड करता है ना, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सब्जेक्टिव का मतलब है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग differs from person to person in many contexts plus circumstances, if not all, and individuals socialization experiences exposures are all ingredient. तो अगर एक्सपोजर अलग है, सोशलाइजेशन अलग है, तो उसके कॉन्शियंस मतलब जो अंतरात्मा है किसी को सही बोल रही है गलत बोल रही है वो भी अलग अलग होंगे. Ingredients in making conscience ना. Imagine a hungry and impoverished child. ये पागलों के जैसे खाना खोज रहा है, तो उसको लिखेंगे लंसी फॉर मील टू मील, picking up what we can just to survive. His sense of conscience is likely to be wedded to force and survival instinct. That is the sharing and compassion. मतलब इनका मानना है कि जो अच्छा शेयर करता है, जो कंपैशनेट होता है, वही अच्छा आदमी.
मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इस जो जो बच्चा है जिस पर खाना नहीं मिल रहा उसका जो कॉन्शियस, उसका मतलब क्या है, खाना खाना है, सर्वाइवल, जिंदा रहना है। हमारा क्या है भाई, शेयर करना है सब चीज, कंपैशन है, तो उसके लिए वो कॉन्शियस का मतलब नहीं है भाई, तो खाना ही नहीं मिल रहा है, बेसिक चीज नहीं मिल रही है। सो शेयरिंग एंड कंपैशन, तो ये पहली बात होगी। सेकेंडली अगर हम बात करें, हमको बात करें इंस्टेंसेस जहाँ पे, है ना, हम बात कर रहे हैं कि इंस्टेंसेस जो कि सब्जेक्टिव है। हमने बोला कि जो कॉन्सेंस सब्जेक्टिव है, लोगों पे डिपेंड करता है कि राइट एंड रॉन्ग क्या है भाई। पहली बात हमने बताया, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया अबाउट एक गरीब बच्चा जिसके खाने के लिए खाना नहीं है, सो इट इज इम्पोवराइज्ड, वीक। अगर दूसरी बात हम करें, सेकेंडली देयर इज नो guarantee that individuals pay heed to their inner voice। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार इंडिविजुअल का अंतरात्मा की आवाज को सुनी जाए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात में, फॉर सेंचुरीज इंडियन सोसाइटी इम्पोज systematic discrimination on the Dalits। They certainly had conscience कि वो गलत कर रहे हैं। Certainly had conscience, but were they paying heed? क्या उस पे वो ध्यान दे रहे थे? और argued before ना, their collective conscience may not have seen it as wrong as we do today। So in such a case, इंडियन सोसाइटी पहले नहीं मानते थे डिस्क्रिमिनेशन खराब है, क्योंकि उनका इनर कॉन्शियस बोलता नहीं था ऐसा, बट आज हम हमारे जैसे देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि खराब है, खराब था वो। सो इन सच अ सेंस और इन सच अ केस वी कैन नॉट क्लेम दैट कॉन्शियस इज, जैसे क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन इज अ प्रैक्टिकल गाइड। हमारा जो टॉपिक का स्टार्ट था वो था कि क्या इनर ये कॉन्शियस एक प्रैक्टिकल गाइड है। जिस समय हमारे पास उस समय हमारे पास ये नॉलेज नहीं था कि वो सही गलत है, तो उस समय नहीं बोल सकते कि इनर कॉन्शियस की बात हमको गलत लग ही नहीं रही थी ना। सो इन सच अ केस वी कैन नॉट क्लेम दैट कॉन्शियस is a practical guide to our action। दूसरी बात तो हो गई ना। तीसरी बात है कि कैसे कॉन्सेंस सब्जेक्टिव है, उसमें पहले दूसरी तीसरी बात कर रहे हैं। थर्डली इट्स नॉट पॉसिबल to hold
individual accountable to their conscience। है वो ऐसे नहीं बोल सकते कि तू अपने बंदरा बंदा की बात क्यों नहीं सुना। सो वी कैन at best hope to create a sense of responsibility। We can at best hope to create a sense of responsibility। This makes conscience less practical guide in many contexts। लेस प्रैक्टिकल कैसे बनाता है भाई कि कुछ कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पे हम हर बार ये नहीं बोल सकते कि कॉन्शियंस की वजह से ही हम काम करेंगे। ओके, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हम ये नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज एंड सिमिलर पब्लिक कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इसमें अंतरात्मा कुछ और चाहेगा लेकिन करना कुछ और रहता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज एंड सिमिलर पब्लिक कॉन्टेक्स्ट चीज़ें में हम ये नहीं बोल सकते कि अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। सो ये प्रैक्टिकल भी है और इम्प्रैक्टिकल भी है। ऑल्सो वी कैन से दैट कॉन्शियंस competes with several other forces। An officer's conscience may tell him it's wrong to take bribe, है ना। कॉन्शियस बोल रहा है कि ब्राइब लेना घूस लेना गलत बात है, बट हिज वांट फॉर मटेरियल कंफर्ट और मटेरियल कंफर्ट ना कंफर्ट चाहने की वजह से, या फिर जो उसके अंदर डिप्रिसिएशन है और डेस्परेशन है कि वो अपने आप को ख़त्म करे, जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज है उससे। His desperation to reduce himself of everyday difficulties, that is financial or otherwise, might make him ignore the conscience। In areas where corruption plus malpractice are systematic, one might put his or her career life at stake for doing the right things। बिकॉज सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो अगर नहीं करूँगा बोलेगा तो अपने रिस्क में डाल रहा है भाई, अपने लाइफ को, अपने करियर को। वेयर करप्शन प्लस malpractices are systemic, one might put his or her career plus life at stake for doing the right thing। लास्टली हम बात करेंगे अबाउट कॉन्शियंस।
Lastly, conscience seems to have a level of, it seems to have a level of what? It seems to have a level of tolerance to come into picture. We read about numerous atrocities in newspaper on a daily basis without much reaction. However, our conscience is likely to be shaped only in some gruesome incidents. Example, Nirbhaya accident, or when injustice occurs to our loved ones. So, how to use conscience, rely on the conscience. So how to use, or sorry, how do we rely on conscience if there is a threshold that, so how do we rely on conscience if there is a threshold that vary from person to person? So how do we rely on conscience if the threshold vary from person to person? इसके बाद पैराग्राफ में हम लिखेंगे clearly conscience as a guide to human action has its own limitation, but we must understand that most of the limitation, or most of the we must understand that most of the limitation of conscience are not with consensus, or not with conscience per se, but with
human not paying heed to it. Even the subjectivity of conscience is not always bad or incurable. Subjectivity of conscience is not always bad or incurable. अगर वो बैड है तो better late than never. The humanity certainly responded to the refugee crisis when the image of a Syrian toddler's body arose on Mediterranean. Mediterranean was displayed. So the question is, how do we make best use of conscience, and as a pro or as a practical guide ओके यहाँ पे भी बट वी मस्ट अंडरस्टैंड जो कॉन्शियंस है दैट मोस्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ कॉन्शियंस आर नॉट विद कॉन्शियंस पर से बट विद द ह्यूमन नॉट पेइंग हीड टू इट. अगर हम बात करें कि कैसे हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं कॉन्शियंस का, सो टू बिगिन विथ individuals and society must pay attention to the process of formation of conscience. To begin with, an individual and society must pay attention to the process of formation of conscience. Value-based parenting, value-based education, society that establish ethical norms, societies that establish ethical norms certainly helps in developing in right direction. Governments with laws, judiciary with judgments in
is constantly providing us input and opportunities to prove our conscience. Okay, and we must put our critical examining mind into action to make use of this opportunity. ओके, सेकेंडली कैसे हम कॉन्शियंस का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंडली, adhering to conscience is not easy, but it is worth it. Like most good things, this is its nature. मुश्किल है, बट जब मिलता है तो बहुत मज़ा आता है. सो वी मस्ट फोस्टर value that help us adhere to conscience, courage. ठीक है, सो वी मस्ट फोस्टर वैल्यूज दैट हेल्प अस adhere टू कॉन्शियंस. कैसे कॉन्शियंस पे adhere रहेंगे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. करेज, fortitude, rational bent of mind are some of the value जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्शियंस के ऊपर टिके रह सकते हैं. सोसाइटी एंड स्टेट मस्ट क्रिएट conditions where people can freely follow their inner voice without fear or favor. Society and state must create conditions where people can freely follow their inner voice. For instance, in administration plus public service, this translates into positive work culture, well designed implemented laws, to punch unethical बिहेवियर. सेकेंड हो गया. थर्ड कैसे हम एथिकल बिहेवियर मेंटेन रख सकते हैं.
thirdly, we as individuals plus society re-examine our priorities. This is needed to counter competing forces discussed before. We have to understand that wealth for its own sake can never bring happiness. There is no evidence scientific or experimental or anecdotal कि वेल्थ खुशियाँ लाता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है. सो वी मस्ट स्टॉप चेजिंग वेल्थ mindlessly and instead examine what make us happy and pursue that life. From the existing wisdom, we understand that from the existing wisdom, we understand that जो पहले से बुद्धिमान लोग हैं बोलते हैं, life lived in pursuit of values is a happy one. So conscience is one such value. तो हमको conscience की बात सुननी चाहिए. Conscience is one such value. लास्ट में कंक्लूड करेंगे by mentioning that nearly all philosophers across the time and space dealt on the topic of conscience. It's not a coincidence. It is because the subject of conscience is integral to humans. One cannot study questions of existence, value, mind without appreciating the role of conscience. बिकॉज इंटीग्रल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए कोई भी इंसान माइंड को स्टडी नहीं कर सकता बिना कॉन्शियस की स्टडी के.
cannot study questions of existence, values and mind, that is subject matter of philosophy. फिलोसफी में क्या होता है भाई, माइंड की स्टडी होती है। So one cannot study without appreciating the role of conscience. Today, all humans as children of Mother Earth are facing number of challenges. कौन कौन challenges face कर रहे हैं भाई? Today, all humans as children of Mother Earth are facing a number of challenges like hunger. So challenges from hunger to exist or essential threats or existential threats exist. एक्सटेंशियल थ्रेट्स, इसमें हम एक्सटेंट हो जाएंगे। और ऐसे है भाई एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्ट जो हम कर रहे हैं उसके लिए जो उसकी वजह से थ्रेट्स हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज। सो देयर आर complex problems those solution must emerge from every single individuals. Sorry, these are complex problem। जो climate change है भाई ये बहुत complex problem है। these are climate और these are complex problem, those solution must emerge from every single individual, and this requires each of us to pay heed to our conscience। हमको अपने कॉन्शियंस पे भरोसा रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है।